to talk to you. Thank you so much. Yes. So we will be starting. Okay, so let's welcome Dr. Soumya. She has scored 189 and in the first attempt. So congratulations, dear. Congratulations for the success. Congratulations to you and to your family. Thank you so much, ma'am. Thank you. So how was your journey for this exam, for the preparation? Ma'am, journey was definitely like that of a roller coaster, ups and downs. But no matter what, I decided that I'll be consistent. There was no day that I see, there were good days, there were bad days, but I tried to study on each and every day, be it one page or two page, but I tried to be consistent. Okay, so the main thing for you was the consistency you maintained during the preparation. Yes, ma'am. On good days, I pushed myself a little extra because I knew, I was aware that there will be bad days as well. So I think that's what kept me going. So how you dealt with those, you said ki bad days or the days when you were doing feeling low or not studying well. So how you used to deal with that और उसको compensate कैसे करते थे? हाँ मैम, पहले तो मैं डील कैसे करती थी, क्योंकि मुझे पता था, मतलब इट वाज नॉट लाइक आई वाज स्टडीइंग और प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई न्यू कि देयर विल बी बैड डेज। तो मैंने उसका मेंटली उसको हेवी नहीं होने दिया अपने ऊपर कि मतलब बैड डेज तो सबके साथ आते हैं, इट्स नॉट लाइक सिर्फ मेरे साथ ही आएंगे। प्लस मैम, मेरे जो फ्रेंड्स थे और जो मेरे स्टडी पार्टनर्स थे, आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल दैट आई हैड माय बेस्ट फ्रेंड्स एंड माय स्टडी पार्टनर्स। तो मैम हम लोग एक दूसरे को बहुत मोटिवेटेड रखते थे थ्रू आउट द जर्नी। प्लस मैम, ऑब्वियसली मिस्ट के टीचर्स हैव बीन मोटिवेटिंग थ्रू आउट। सो इट वाजंट लाइक के बैड डेज पे मैम मैंने इतना लोड नहीं लिया। मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, मेरे गुड डेज भी आएंगे, मैं उस पर कॉम्पनसेट कर लूंगी। एंड गुड डेज में आई यूज टू, इफ नॉर्मली इफ आई एम स्टडिंग फॉर 8 to 9 hours, आई यूज टू पुश माई सेल्फ टू स्टडी फॉर 10 to 12 hours. So that's how I compensated. That's really good. This is a very good thing you have told that on the good days you used to do some more hours of study. Plus, when you are feeling low, so the role of the teachers, the faculty, and as well as your friends is there. So Yes, ma'am. So that means that when you are going through this preparation, we should keep our good friends close to us, right? Yes, ma'am. Definitely, definitely. And ma'am, one of my very good friend, you interviewed her day before yesterday, Dr. Palak. So we both studied from MIST, and another friend, Dr. Abdul Wase Khan. We all studied from MIST. It was like first attempt for all of us, and we cleared it all. Yes, ma'am. So that's a big deal that we all used to study together. We used to have discussions, and we all cleared it in the first attempt. So that's a very big victory for all of us. So congratulations to, in fact, all of you. And this is a very good thing that you all have cleared in the first attempt together, all the friends. So that's really good. That's really great, actually. So during the classes, when the classes were there, you were doing the online class. After the online class, what was your schedule? And what was your, how you used to prepare for the test, weekly test? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So after every class, me and my friends who were studying from MIST, we all had this very basic unsaid rule that we will revise the same class on the same day. It cannot go on to another day, because otherwise it's going to be a very big, it increases your load on the next day, it increases your workload. So we decided that we will complete the same class on the same day, revision. And we used to solve as many questions as possible. And for the weekly tests, ma'am, it was our target, like we all used to discuss and study together for that test. So that's how we all used to score almost nearly the same marks in all the tests. And even in the main exam, ma'am, Palak and I, we scored nearly together. Like she scored 182 and I scored 189. So from the starting of the journey, since we have joined MIST, we have been giving tests together. And in the main exam also, it was like that only, like plus minus 10, we used to score like that. That is really great. And a doubt which every friends of yours is having is that how to manage your time during these classes. Like you said that after the class, you revise the whole content and you are doing MCQ. So how you used to, manage that time? Ma'am, after the class used to end, I used to take like a good 1 hour for myself.
to get refreshed. And then again, I used to sit and I used to revise the entire workbook, the number of pages in the workbook that used to be covered in the same day, plus the old classes, because so that it does not piles up. So I used to revise the workbook, and then I used to solve questions. And it used to take some time. Like, I would say I used to sleep a little late by 1 or 2, but then I knew it is only for few months that I have to compromise on my sleep. But yes, and then I used to wake up by 6 or 7, and then I used to, again revise and then continue with the next day classes. Okay, so that's really great that you have told us these things. And when you were revising the same day lecture, so you when you listen the lecture like with focus, so there must be like a thing that you are able to revise a bit quicker. So was it there? Was this kind of thing was there? यस मैम, एग्जाम में सिर्फ दो चीजें काम आती है. एक तो फर्स्ट, अगर आपने फोकस से क्लासेस को सुना है तो यू विल इवन रिमेम्बर के वो क्लास में वो टीचर ने क्या एक्शन करके क्या बताया था. तो इट्स अबाउट द फोकस. एंड सेकेंडली, अगर आपने अपनी वर्कबुक का रिविजन बहुत अच्छे से किया है तो वो फोटोग्राफिक मेमोरी आपको वहां पे काम करती है. तो दीज टू थिंग्स हेल्प मी अ लॉट. लाइक, आई अटेंडेड ऑल द लेक्चर्स विद लाइक utmost focus that I could do that time, and I also did multiple revisions of my workbook, so both of them like helped in my main exam. Okay, so that's really good that you are telling that first of all, we should listen carefully in the class, focused. And you said photographic memory, like whenever you revise the things again and again, it is like a kind of photographic memory. You remember कि ये वाली चीज यहाँ दी हुई थी, इतना Yes, याद ma'am. रहता है. Okay, Yes, that's ma'am. really great. That's really great. And like, what about the subject-wise test and the other test, mock test? Yes, ma'am. Ma'am, I tried to give all the tests that the MIST conducted, and it really helped. Like, because if like that used to serve as a target for me, that much of that syllabus used to be completed, and then it becomes really easy to then revise from then on, because you have already done it in detail for that particular topic wise test or subject wise test. So like, they were really helpful. Okay, so like basically when you were giving the subject-wise test, you found that it was very helpful. So because at that time you used to complete that subject. Yes, ma'am. Yes, एक ma'am. बार मतलब पहले एक बार जो रिवीजन हुई थी, एक सेकंड टाइम रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाती थी. Yes, ma'am. 100%. Okay, that is really great. And like after the syllabus was completed, during the revision time, when you had the whole day with you, how you like managed those days? Like how you used to revise कि कौन सा सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, कुछ इस तरीके से क्या आपका शेड्यूल रहता था? मैम, मेरा शेड्यूल मैंने अपने लिए कस्टमाइज करके रखा था. इट वाज नॉट लाइक आई वाज फॉलोइंग समबडी एल्स, बिकॉज मुझे मालूम है कि आई स्टडीड इन एन ऑर्डर कि मुझे पता है कि मेजर सब्जेक्ट्स क्या है, कौन से ज्यादा स्कोरिंग है, इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स क्या है, एंड माइनर्स क्या है. प्लस मुझे ऐसे पता था कि मेरे कुछ सब्जेक्ट्स है जो मेरे पर्सनल फेवरेट है, उनको तो मैं कितनी भी बार पढ़ सकती हूँ, बट देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स जिनको पढ़ने में मुझे लिटरली मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते थे. तो आई मेड श्योर कि आई एम स्टडिंग दो सब्जेक्ट्स मोर, बिकॉज वहां पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है. एंड आई डिड नॉट लीव एनी सब्जेक्ट फॉर द एग्जाम. एंड मैम, अमित सर एक बात बोलते थे कि बेटा, हमें क्लास में व्हील चेयर पे नहीं जाना है, हमें AK-47 लेके जाना है, तो हम सब करके जाएंगे. तो दैट थॉट वाज देयर इन माय माइंड. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज के आई ट्राइड टू डू मेजर्स. सारे मेजर सब्जेक्ट्स मैंने बहुत अच्छे से कर लिए थे. माइनर्स मैंने लास्ट में किए मैम, बट मैंने बहुत अच्छे से किए थे, उनका भी मल्टीपल रिविजन हो गया था. एंड इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स में जैसे मैम आपने एनाटॉमी बहुत अच्छा पढ़ाया है, और माइक्रो, फार्मा, बायोकेम, मैम दीज वर वेरी वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स. तो आई made sure that I'm revising these volatile subjects, especially in the last 2 days. So that helped me a lot, because that is really volatile and I needed to like have that thing in my mind before I go to exam. एंड जिन डेज पे मैम, जब कोचिंग में सिलेबस खत्म हो गया था और मेरे पास पूरा दिन रहता था करने के लिए, तो मैंने अपने टाइम ब्लॉक्स के हिसाब से मैंने सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लिया था कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, अकॉर्डिंग टू माय प्रायोरिटीज लाइक एंड माय इंटरेस्ट. तो ऐसे ही किया था. अच्छा, लाइक कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपना टारगेट सेट करते हैं, अपना शेड्यूल सेट करते हैं और उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं बाई चांस. लाइक जैसे एक दिन का शेड्यूल सेट किया, वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको मतलब कैसे क्या मतलब मैनेज करते थे? मैम, वही जिस दिन टारगेट नहीं कंप्लीट होता था उसी को मैं बैड डे बुलाती थी, क्योंकि आज टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर गुड डेज पे एक्स्ट्रा पुश करना है. प्लस मैम, वही माय फ्रेंड्स, मतलब अगर आप डिस्कस कर रहे हो कोई चीज अपने फ्रेंड्स के साथ तो वो इजीली कंप्लीट हो जाती थी. तो आई यूज्ड टू टेक माय फ्रेंड्स हेल्प, माय फ्रेंड्स एंड माय स्टडी पार्टनर्स हेल्प, कि भाई ये करवा दो, तो ऐसे इजीली हो जाता था. So like basically what I can see was that throughout your preparation you were quite positive.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. पॉजिटिविटी, एक्चुअली दैट पॉजिटिविटी हैज बीन वेरी हेल्पफुल टू यू, क्योंकि बैड डेज और गुड डेज, ये आपको पता था कि बैड डेज आने हैं, कुछ ना कुछ डेज लो डेज होने हैं, तो उसमें हम्म. मतलब परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, उसमें हाँ. भी लगना है। और अगर उसको जिस दिन भी अच्छा आपका पढ़ाई का मूड है, जिस दिन अच्छी पढ़ाई हो रही है, उस दिन फटाफट कंपनसेट भी करना है। दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। यूजुअली व्हाट हैपेंस ना कि जैसे बैड डे होता है, जब हम लो फील करते हैं, तो उसी विशियस साइकिल में फंसे रह जाते हैं और वहां से Yes, निकलते ma'am. नहीं हम बाहर। So that this is a really good thing, very appreciable that you have been so positive throughout your preparation, really. And can you tell me the day of exam, like the experience or your experience on the day, on the exam day, कि थोड़ा सा ऐसा होता है कि उस दिन एंजाइटी होती है, वो तो नेचुरल है। So what was your experience? मैम एनजाइटी तो मुझे एक दिन पहले से रात में हो गई थी, तो नींद ही नहीं आई थी। तो दैट वाज लाइक, लेकिन फिर मैम जस्ट एग्जाम के पहले आप लोगों का मिस्ड का एक वीडियो आया था, जिसमें आप लोगों ने बोला था कि अगर नींद नहीं भी पूरी हुई तो ये मत सोचना कि अगले दिन का एग्जाम बिगड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो अच्छे से एग्जाम लिख कर आओगे। तो मेरे दिमाग में वही था कि ठीक है, नींद तो नहीं आएगी, पता है इतनी एंजाइटी हो रही है। तो नेक्स्ट डे जब एग्जाम देने गए, तो जब मैं एग्जाम हॉल में बैठी ना मैम, मेरा फिर से वही पॉजिटिव एटीट्यूड ही था कि जो आता है वो कर देंगे, जितना पढ़ लिया अपने हाथ में था, अपन करके आ जाएंगे, बाकी रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है, तो वो तो ऊपर वाला ही दिखेगा। तो मैम वही पॉजिटिव एटीट्यूड था और वैसे ही मैं देकर आ गई। वेरी गुड, वेरी नाइस डियर, वेरी नाइस। और अगर कोई टफ क्वेश्चन सामने आ जाए तब क्या करना चाहिए, तब कैसे तुमने टफ डील किया? टफ क्वेश्चन तो मैम ऐसा था कि मुझे पता है कि मैंने मतलब जितना मुझे आता है मैं अच्छे से पढ़ के आई हूँ। तो मैम एग्जाम हॉल में मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि कोई क्वेश्चन आया है और मैं ये सोच रही हूँ कि अरे यार शिट, ये पढ़ा था तो ये तो याद ही नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये था कि मैम वर्कबुक से अगर एग्जैक्टली वर्ड सेम नहीं आया तो लेकिन कंसेप्ट आया हुआ है, ओके। तो कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो जो भी हार्ड क्वेश्चंस थे वहां पे मैं जितना दिमाग लगा सकती थी मैं लगा लेती थी, और अगर कोई ऐसा है जो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, मैम आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम, आई डिसाइडेड दैट कि इसमें कुछ भी नहीं आता, ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन करो और आगे बढ़ जाओ, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। तो मैंने ऐसे ही किया था। Oh, that is very good. You have actually approached very well for the preparation as well as for your exam. A very good approach in fact, कि अगर जिस क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, तो उसमें टाइम हम्म. वेस्ट करो, उसको आंसर लगाओ, चाहे उसे रिव्यू पे लगा दो, बट आंसर लगा दो। हाँ मैम रिव्यू पे लगाया था, लगा दिया था, और फिर लास्ट में मैम मैंने आप लोग के जो वीडियो थे उसमें ये भी था कि फर्स्ट इंस्टिंक्ट में जो आंसर लगा रहे हो वही लगाना, और रिव्यू में आके इसको चेंज मत करना जब तक यू आर नॉट 100% श्योर कि आपका आंसर आपने सही लगाया नहीं है, ऐसे करके। तो मैंने वही करा, मैंने रिव्यू में आके कोई भी अपना इंस्टिंक्ट वाला आंसर चेंज नहीं किया। तो दैट इज व्हाट हेल्प्ड मी अलॉट, बट अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स वर क्रिबिंग अबाउट दैट कि यार हमने लास्ट मोमेंट पे आंसर चेंज कर दिया रिव्यू में। सो आई वाज लाइक थैंक यू टू मिस्ड फॉर दैट वीडियो। सो आई डिड नॉट चेंज माय आंसर्स। Yeah, that is really good, very very great. And like as you also told कि concept की कई चीजें थी जो वर्कबुक के concept में थी, Yes, so ma'am. you must have felt कि जो classes और वर्कबुक में जो notes थे वो भी काफी useful रहे आपके एग्जाम में, like 100%, ma'am. Yes, ma'am. 100%. All the concepts were very useful, and कुछ तो मैम डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आ जाते हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात थी, बट देन मैम कहीं कहीं आपको कंसेप्ट लगाना पड़ता है। तो मैंने मैम क्लासेस अगर आप फोकस से सुन रहे हो और आपका कंसेप्ट वो बिल्ड हो रहे हैं, तो इट विल हेल्प यू। Okay, so that's really good. We are happy to listen to your experience, and I wish कि it is very very helpful to all of your friends. And कुछ भी ऐसी आपकी 2 या 3 टिप्स जो आपको लगता है कि जो बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए, ताकि एग्जाम क्लियर हो जाए। हाँ मैम, फर्स्ट टिप तो पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब कि टू हैव दैट माइंडसेट ऑलरेडी कि यू आर गोइंग टू हैव बैड डेज। लाइक आप ये नहीं सोच सकते कि आपके जितने भी मंथ्स है प्रिपरेशन के वो सब गुड 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 होने वाले हैं। तो आप पहले से ही अपने माइंड पे बना लो कि बैड डेज आएंगे, और उस दिन पे आपने हार नहीं माननी है, आपने रोना नहीं है, एंजाइटी नहीं करनी है अपने आप को। नेक्स्ट डे या जो भी गुड डे होगा वहां पे आप कवर कर लोगे। तो फर्स्ट मेरी टिप वो होगी। Awesome. सेकेंड टिप मैम के like be a little physically active and check on your diet, because Amit sir emphasizes on that a lot, and he also developed this habit in all of us to have this soaked walnuts and almonds. So I also Yes. used it, so it was really of help. Like I thought कि उससे कुछ affect हो रहा है, तो मैं भी वो सबको बोलना चाहूंगी कि follow it. And then motivation is temporary, ma'am, discipline is permanent. That's what I used to Very, think of. very like awesome. So What ma'am, you these said again, you again.
motivation is temporary, but discipline is permanent. So we should keep that in our mind. That you cannot rely on motivation, for your preparation. You have to be disciplined. Very nice. Yeah, that was really good. And I'm sure that it will be very, very helpful to your friends. Like whatever you have told and whatever tips you have given, it will be very helpful to other of your friends also. So dear, congratulations to you again. And Thank you. yeah, and best wishes for your future. You actually deserved to get this score because your preparation and your exam approach, and you're very clear by your mind that how you have to do and what you have to do. So dear, congratulations again.